Ant is an intelligent and beautiful insect in this world. اینٹ کو عربی میں نملہ کہا جاتا ہے، اینٹ کو اردو میں چیونٹی کہا جاتا ہے، ہندی میں چینٹی کہا جاتا ہے، اینڈ فرینچ میں اس کو فورمی کہتے ہیں، اسپینش زبان میں اس کو ہورمیگا کہتے ہیں، ملیشین لینگویج میں اس کو سیمو کہتے ہیں. So ants are very beautiful and intelligent insects. About the lifespan of an ant, one ant can be few weeks or even 15 years. So the average age of ant is 7 to 8 years, 9 years, 10 years. It depends on their work, on their hard work in the colony where they are living. Most of the ants, they have the responsibilities, they have the work there in the colony, which divided by the queen. The queen is the female there in the colony, she is the mother of all the ants. She in the colony, so she manage all the systems. She give the responsibilities to all the members of the colony. So ants are very beautiful. They have good brain. Scientists consider that ants have the best brain in all insects. They can search for food. Ant can use complex navigation over long distance. Ants are eusocial insects of the family. چیونٹیاں جو ہیں وہ فورمیسیڈائے خاندان کے ای سوشل حشرات ہیں اور شہد کی مکھیوں کے ساتھ ہائپنو پریٹا آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں. چیونٹیاں کریٹائسس دور میں ویسپورڈ تیتنیا کے آباء و اجداد سے تیار ہوئیں. تخمینہ شدہ یعنی 22,000 پرجاتیوں میں سے 13,800 سے زیادہ کی درجہ بندی کی گئی ہے. ان کی آسانی سے ان کے جینیٹکس کونی والے اینٹینا اور مخصوص نور نما ڈھانچہ سے پہچانا جاتا ہے جو ان کی پتلی کمر کو بناتا ہے. Ants are eusocial insects of the family Formicidae and along with the related wasps and bees belong to the order Hymenoptera. Ants evolved from Vespoid wasp ancestors in the Cretaceous period. More than 13,800 of an estimated total of 22,000 species have been classified. They are easily identified by their geniculate antennae and the distinctive node-like structure that forms their cylinder waists. The only places lacking indigenous ants are in Antarctica and a few remote or inhospitable islands. انٹارکٹیکا اور چند دور دراز یا غیر مہمان جزیرے جن میں دیسی چیونٹیوں کی کمی نہیں ہے. چیونٹیاں ماحولیاتی نظام میں پروان چڑھتی ہیں اور یہ جنگلی پرندوں اور یعنی دنیا میں یہ چیونٹیاں ہر جگہ موجود ہیں، صرف انٹارکٹیکا براعظم کو چھوڑ کے انٹارکٹیکا میں نہیں ہیں. ان کی کامیابی کا سہرا ان کی سماجی تنظیم اور رہائش گاہوں کو تبدیل کرنے، وسائل کو استعمال کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی ان کی صلاحیت سے منسوب کیا گیا ہے. دیگر پرجاتیوں کے ساتھ ان کی طویل ہم آہنگی نے نقلی اور باہمی تعلقات کو جنم دیا ہے. چیونٹی معاشروں میں محنت کی تقسیم، افراد کے درمیان رابطے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. انسانی معاشروں کے ساتھ یہ مماثلت طویل عرصے سے ایک تحریک اور مطالعہ کا موضوع رہی ہے. بہت سی انسانی ثقافتیں کھانے، ادویات اور رسومات میں چیونٹیوں کا استعمال کرتی ہیں. کچھ پرجاتیوں کو حیاتیاتی کیڑوں پر قابو پانے والے ایجنٹوں کے طور پر ان کے کردار میں اہمیت دی جاتی ہے. وسائل کے استحصال کرنے کی ان کی صلاحیت چیونٹیوں کو انسانوں کے ساتھ تنازع میں لا سکتی ہے. تاہم کیونکہ وہ فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور عمارتوں پر حملہ کر سکتی ہیں، کچھ پرجاتیوں جیسے کہ جنوبی امریکہ کی سرخ درآمد شدہ آگ چیونٹی جس کا نام
सोलोनोपिसिस इनविक्टा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में हमलावर नस्ल के तौर पर शुमार किया जाता है जो इन इलाकों में अपने आप को कायम करती है जहां वो आसाती तौर पर मुतारफ होती है। So if we will talk about ant societies has division of labor communications between individuals and an ability to solve complex problems. These parallels with human societies have long been an inspiration and subject of study. Many human cultures make use of ants in cuisine, medication, and rites. Some species are valued in their role of biological pest control agents. Their ability to exploit resources may bring ants into conflict with humans. However, as they can damage crops and invade buildings, some species such as the red imported fire ant, which name is Solanum invicta of South America, are regarded as invasive species in other parts of the world, establishing themselves in areas where they have been introduced accidentally. If we will talk about the start of चीونटी की ज़िंदगी अंडे से शुरू होती है। अगर अंडे को जरखेज़ किया जाए तो औलाद मादा डिप्लॉयड होगी। चींटियाँ मुकम्मल मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए नशोनुमा पाती हैं जिसमें लार्वा के मराहिल बालग होने से पहले प्यूपा के मरहले से गुजरते हैं। लार्वा बड़ी हद तक गैर मुतहरक होता है और इसे कारकुनों के ज़रिए खिलाया और उनकी देखभाल की जाती है। लार्वा को खुराक ट्रोफ्लेक्सिस के ज़रिए दी जाती है, एक ऐसा अमल जिसमें चिमटी अपनी फसल में मौजूद माया खुराक को दोबारा जमा करती है। इस तरह बालग अफराद माशरती पेट में ज़ख़ीरा शुदा खाना बांटते हैं। लार्वा ख़ास तौर पर बाद के मराइल में ठोस खुराक भी फराहम की जा सकती है जिसे ट्रैफिक अंडे, शिकार के टुकड़े और मज़दूरों के ज़रिए लाए गए बीज। लार्वा 4 या 5 मोल्ट्स की एक सीरीज़ के ज़रिए बढ़ता है और पिपल के मरहले में दाखिल होता है। प्यूपा में एंडेजेस आज़ाद होते हैं और तितली के प्यूपा की तरह जिस्म से नहीं मिलते। रानियों और कारकुनों में फ़र्क और कारकुनों के मुख्तलिफ ज़ातें कुछ अनवा में लार्वा को हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत से मुतासर होती है। जीनियाती असरात और नशोनुमा के माहौल के ज़रिए जीन के इज़हार का कंट्रोल पेचीदा और ज़ात का तयन तहकीक का मौजू बना हुआ है। परों वाली नर चींटियाँ जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, पुराने अदब में इसको अनीर भी कहा जाता है। अनीर आमतौर पर परों वाली अफज़ाइशी नस्ल की मादा के साथ प्यूपा से निकलती हैं। कुछ प्रजातियों जैसे आर्मी चींटी बग़ैर परों वाली मलका रखती हैं। लार्वा और प्यूपा को मुनासिब नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी मुस्तकिल दर्जा हरारत पर रखने की ज़रूरत होती है और इसलिए अक्सर कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ ब्रॉड चैम्बरों के दरमियान मुंतकिल किया जाता है। So if we will talk about the ant head, so इसका जो सर होता है bull ant showing the powerful mandible and the relatively large compound eyes that provide excellent vision. An ant's head contains many sensory organs. Like most insects, ants have compound eyes made from numerous tiny lenses attached together. Ant eyes are good for acute movement detection but do not offer a high resolution image. They also have 3 small ocelli, simple eyes, on the top of the head that detect light levels and polarization. Compared to vertebrates, ants tend to have bullier eyesight, particularly in small species, and a few subterranean taxa are completely blind. However, some ants such as Australia bulldog ant have excellent vision
and are capable of discriminating the distance and size of objects moving nearly a meter away. So if we will talk about the یعنی چیونٹی کے سر کے بارے میں اگر بات کریں، چیونٹی کا سر میں کئی حصی اعضاء ہوتے ہیں. زیادہ تر کیڑوں کی طرح چیونٹیوں کی بھی مرکب آنکھیں ہوتی ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوئے متعدد چھوٹے لینس سے بنی ہوتی ہیں. چیونٹی کی آنکھیں تیز حرکت کا پتہ لگانے کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن ہائی ریزولوشن والی تصویر پیش. چیونٹی کے سر کے اوپری حصے میں پر 3 چھوٹی سی سیلی سادہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں جن کو سیلی کہتے ہیں، جو روشنی کی سطح اور پولرائزیشن کا پتہ لگاتی ہیں. کثیر کا جانوروں کے مقابلے میں چیونٹیوں کی نظر دھندلی ہوتی ہے، خاص طور پر چھوٹی نسلوں میں، اور کچھ زیر زمین ٹیکسا مکمل طور پر اندھے ہوتے ہیں. کچھ چیونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل اندھی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اندھی بھی رہتی ہیں. تاہم کچھ چیونٹیاں جیسے کہ آسٹریلیا کی بل ڈاگ چیونٹی بہترین بصارت رکھتی ہیں اور تقریباً 1 میٹر دور تک حرکت کرنے والی اشیاء کے فاصلے اور سائز میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. سر کے ساتھ جو چیزیں اس کے سر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس میں کچھ اعضاء کیمیکل ہیں، کرنٹ کیمپین کا پتہ لگاتے ہیں، وہ رابطے کے ذریعے سگنل کی ترسیل اور وصول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ 2 مینڈلز بڑے مضبوط جڑے ہوتے ہیں جو خوراک لے جانے، اشیاء میں جوڑ توڑ، گھونسلے بنانے اور دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے منہ کے آگے جو 2 لگے ہوتے ہیں نا دونوں طرف، جس میں یہ دانے اور یہ چیزیں پکڑ لیتی ہے اور کسی چیز کو کاٹتی بھی ہے. سو دیٹ از دا تھنگ، خوراک کو ذخیرہ کرتی ہے، ادھر ادھر لے جاتی ہے، اس لیے یہ دوسری چیونٹیوں یا ان کے لاروا تک پہنچ سکتی ہے. So the lifespan of an ant, the average lifespan of an ant can be anywhere from a few weeks of 15 years. That depends on the species, the role of ant plays and the availability of food sources. For instance, a black garden ant can live almost 2 decades, while fire ant workers are expected to live less than a month. So they have a different lifespan. اینٹس اور یعنی یہ اینٹس جو ہیں یہ حشرات ہیں، تو یہ کالونیاں بنا کے رہتی ہیں. چیونٹیاں کالونیاں بناتی ہیں جن کا سائز چھوٹے قدرتی گاؤں میں رہنے والے چند درجن شکاری افراد سے لے کر انتہائی منظم کالونیوں تک ہوتا ہے جو بڑے علاقوں پر قابض ہو سکتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ ہوتی ہیں. یعنی ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے جن کالونیوں میں یہ اکٹھے ہو کے رہتی ہیں. چیونٹیاں کھانا اکٹھا کھاتی ہیں. چیونٹیوں نے زمین پر تقریباً ہر زمینی حصے پر کو نو آبادیاتی جو ہے وہ بنا لیا ہے. So if we will talk about the communication, behavior and ecology, ants communicate with each other using pheromones, sounds and touch. Since most ants live on the ground, they use the soil surface to leave pheromone trails that may be followed by other ants. یعنی چیونٹیاں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ آواز سے ٹچ کر کے، اس طرح وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر کے میسج پہنچاتی ہیں. ان اسپیسیز دیٹ forage in groups, forager that finds food marks a trail on the way back to the colony. This trail is followed by other ants. These ants then reinforce the trail when they head back with food to the colony. When the food source is exhausted, no new trails are marked by returning ants and since slowly dissipates. So if we will talk about their defense, ants attack and defend themselves by biting,
यानी ये काट भी सकती हैं, यानी ये अपना डिफेंस करने के लिए काटती भी हैं. Many species by stinging, often injecting or spraying chemicals. Bullet ants located in Central and South America are considered to have the most painful sting of any insect. Although it is usually not fatal to humans, this sting is given the highest rating on the sting pain. So trapjaw ant of the genus are equipped with mandibles called trapjaws, which snap shut faster than any other predatory appendages within the animal kingdom. So, if we will talk about their learning, many animals can learn behaviors by imitation, but ants may be the only group apart from mammals where interactive teaching has been observed. A knowledgeable forager can lead a nest mate. Newly discovered food by the process of tandem running. The follower obtains knowledge through its leading tutor. The leader is actually sensitive to the progress of the followers and slows down when the follower tags and speeds up when the follower gets too close. Controlled experiments with colonies suggest that an individual may choose nest roles based on her previous experience. An entire generation of identical workers was divided into two groups whose outcome in food foraging was controlled. One group was continually rewarded with prey, while it was made certain that the other failed. As a result, members of the successful group intensified their fragging attempts while the unsuccessful group ventured out. Fewer and fewer times. A month later, the successful foragers continued in their role while the other had moved to specialize in broad care. So, if we will talk about their the nest construction, यानी ये कैसे घोंसला बनाती हैं, ये किस तरह वो रहती हैं, तो जैसे वो ट्रैवल करती हैं. Complex nests are built by many ant species, but other species are nomadic and do not build permanent structures. Ants may form subterranean nests or build them on trees. These nests may be found in the ground under stones. और इसका जो कल्टीवेशन ऑफ फूड है, यानी जो चिवंटियाँ होती हैं वो फूड को जनरली कैसे यूज़ करती हैं और उनका क्या तरीका होता है, किस तरह वो फूड खाती हैं. मोस्ट एट्स आर जनरलिस्ट प्रीडेटर्स एंड इंडायरेक्ट हर्बाइवर्स, but a few have evolved specialized way of obtaining nutrition. It is believed that many ant species that engage in indirect herbivory rely on specialized symbiosis with their gut microbes to upgrade the nutritional value of the food they collect and allow them to survive in nitrogen poor regions such as rainforest canopies, and feed exclusively on a fungus that grows only within their colonies. They continually collect leaves which are taken to the colony, cut into tiny pieces and placed in fungal garden. So, if we will talk about the cooperation and competition, not all ants have the same kind of societies. The Australian bulldog ants are among the biggest and most basal of ants. Like virtually all ants, they are eusocial.
but their social behavior is poorly developed compared to other species. Each individual hunts alone, using her large eyes instead of chemical senses to find prey. इनके जो रिलेशनशिप है और जो इनका ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में अगर बात करें तो उसमें ये जो यानी जो एंट्स फॉर्म symbiotic associations with a range of species, including other ant species, other insect, plants, and fungi. They also are preyed on by many animals and even certain fungi. Some are चींटियाँ बहुत से माहौलियाती किरदार अदा करती हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, बशमूल कीड़ों की आबादी को दबाना और मिट्टी को हवा देना। जनूबी चीन में लीमू की काश्त में वीवर चींटियों के इस्तेमाल के हयातियाती कंट्रोल के कदीम तरीन इस्तेमाल में एक समझा जाता है। दूसरी तरफ चींटियाँ परेशानी का बायस भी बन सकती हैं जब वो इमारतों पर हमला करती हैं या माशी नुकसान पहुंचाती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों, बुनियादी तौर पर अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में बड़ी चींटियाँ, ख़ास तौर पर आर्मी चींटियाँ, सर्जिकल सेवन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ज़ख़म को एक साथ दबाया जाता है और इसके साथ चींटियाँ लगाई जाती हैं। चींटी ज़ख़म के किनारों को अपनी मैंडिबल में पकड़ लेती है और जगह पर ताले लगा देती है। इसके बाद जिस्म को काट दिया जाता है और ज़ख़म को बंद करने के लिए सर और मैंडिबल अपनी जगह पर रहते हैं। यानी चींटी के जब अपने मुंह से किसी जगह को वो उसको पकड़ लेती है, यानी वो कटी हुई जगह को, जिस्म को, तो फिर उसका पिछला धड़ा अलग कर दिया जाता है ताकि वो उस को लॉक के तौर पर यूज़ किया जा सके उसके अगले हिस्से को। जो कटिंग चींटी एटासेफोलिटिस के डिनर गेट्स के बड़े सरों को मकामी सर्जन ज़ख्मों को बंद करने में भी इस्तेमाल करते रहे। कुछ चींटियों में जहरीला जहर होता है और इनकी तिबी अहमियत होती है। अनवा में जैसे डाइनोपोनेरा शामिल है। जनूबी अमेरिका की कुछ चींटियाँ हैं जो और ऑस्ट्रेलिया की कुछ चींटियाँ हैं जो मायरमीसिया यानी इनमें इस्तेमाल होती रही हैं दवाइयों के तौर पर भी। जनूबी अफ्रीका में चींटियों को रियोबोस के बीजों की कटाई में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा जड़ी बूटियों की चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पौधा अपने बीजों को बड़े पैमाने पर फैलाता है जिससे दस्ती जमा करना मुश्किल हो जाता है। काली चींटियाँ और दीगर बीजों को अपने घोंसले में जमा और ज़ख़ीरा करती हैं जहाँ इंसान इन्हें एक साथ जमा कर सकते हैं। एक चींटी के ढेर से आधा पाउंड यानी 200 ग्राम तक बीज इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगरचा ज़्यादातर चींटियाँ इंसानों की तरफ से इनको ख़त्म करने की कोशिशों से बच जाती हैं, लेकिन चंद एक इंतहाई ख़तरे से दो चार हैं। ये जजीरे की अनवा हैं जिन्होंने खसूसी खिसलतों को तैयार किया है। मुतारफ़ शुदा चींटी की नस्लों के ज़रिए बेघर होने का ख़तरा है। मिसाल के तौर पे यानी शदीद तौर पर ख़तरे से दो चार, जैसे श्रीलंका की वो ओशिश चींटी और मडगास्कर की वो एडमायरमा चींटी है। Some ants have toxic venom and of medical importance. They have medical importance. So if we will talk about, although most ants survive attempts by humans to eradicate them, a few are highly endangered. These tend to be island species that have evolved specialized traits and risk being displaced by introduced ant species. Examples include the critically endangered Sri Lanka relict ant and Aditomyra of Madagascar. So, however, some ants such as Australia bulldog ant have excellent vision and capable of discriminating the distance and size of the object.
So, if we will talk about in science and technology observed by humans since the dawn of history, the behavior of ants have been documented and the subject of early writings and fables passed from one century to another. Those using scientific methods study ants in the laboratory and in their natural conditions. Their complex and variable social structures have made ants ideal. So, model organism ultraviolet vision was first discovered in ants by Sir John Lubbock in 1881. Studies on ants have tested hypotheses in ecology and sociobiology and have been particularly important in examining the predictions of theories of kin selection and evolutionary stable strategies. Ant colonies may be enclosures. Individuals may be tracked for study by marking them with dots of colors. So, अगर ऐसी बात की जाए कि ये पेट था तो from the late 1950s, though the late 1978 farms were popular educational children's toys in the United States. Some later commercial versions use transparent gel instead of soil, allowing greater visibility at the cost of stressing the ants with unnatural light. So, ants have often been used in fables and children's stories to represent industriousness and cooperative effort. They also are mentioned in religious texts in the book of Proverbs, in the Bible. Ants are help up as a good example of hard work and cooperation. Some modern authors have used the example of the ants to comment on the relationship between society and individual. Examples are like Robert Frost in his poem. The poem is Departmental, and T.H. White in his fantasy novel The Once and Future King. The plot in French entomologist and writer Bernard. And also the words of ants and humans. Ants and their behavior is described using contemporary scientific knowledge. H.G. Wells wrote about intelligent ants destroying human settlements in Brazil and threatening human civilization in his 1905 science fiction short story. The Empire of the Ants. In more recent times, animated cartoons and animated films featuring ants have been produced, including 4D Ant and the Darkness, The Ant Bully, The Bug's Life, Atom Ant, renowned. So, which describe the life and death of an ant queen. यानी जो चींटियाँ होती हैं इनकी एक कोइन होती है और राइज ऑफ फॉल उस कॉलोनी का जो होता है, यानी उस कॉलोनी के उनकी रैश पे जो अरूज और जो जवाल आता है और जो जिस तरह वो चीज़ें मैनेज करती हैं. फ्रॉम एन एंट पॉइंट ऑफ व्यू द फ्रेंच न्यूरोनाटोमिस्ट psychiatrists and Augusto Forel believed that ant societies were model for human society. He published a 5-volume work from 1921 to 1923 that examined ant biology and society. In the early 1990s, the video game Sim Ant, which simulated an ant colony, won the 1992 Cody Award for Best Simulating Program. Ants also
So ants have a lot of stories in the world. Ants are lovely. Ants forms colonies that range in size from a few dozen predatory individuals living in small natural cavities to highly organized colonies. Ants can be found on every single continent except Antarctica. Ants are social insects which live in colonies. Ants don't have ears and some of them don't have eyes even. The largest ants nest ever found was over 3,700 miles wide. Ants act as decomposers by feeding on organic waste, insects, or other dead animals. They help keep the environment clean. Carpenter ants, which make their nests in dead or diseased wood, considerably accelerate the decomposition process of timber. यानी जो लकड़ी को यूज़ करके वो जो उनको कारपेंटर एंट्स कहते हैं, वो जो लकड़ी का काम करती हैं उसको यूज़ करके लकड़ी पर जो भी काम करती हैं. So ants temporarily range late Albanian फ्लेमोसिडाई सुपर फैमिली है इनकी, जिस फैमिली का जो है वो दरियाफ्त 1809 में हुई थी. तो इसके कुछ जो शुरू के रूफा फॉर्मिका रूफा में हिस्ट्री मिलती है वो 1761 की है. वो शवाहिद हैं इस पर जो रिसर्च हो. एंट्स कैन कंटेमिनेट फूड, but most common species in the United States generally do not cause public health hazards. Species of ants that are dangerous to human health include fire ants, red imported fire ants. So ants have superhuman strength. Yes, you did read that correctly. Ants don't have lungs. Ants don't have ears. There are a lot of ants in the world. Some ant species are asexual. Ants are farmers. Ants have 2 stomachs. Ants can swim. So these are the facts about the ant. Ants are asocial insect of the family of Formicidae, and along with the related wasp and bees belong to the order Hymenoptera. Ants involved from wasp. So if we will talk about, there are more than 12,000 different types of ants all over the world. दुनिया में 12,000 मुख्तलिफ किस्मों की चियूंटियाँ पाई जाती हैं. Ants can lift 20 times their own body weight. यानी चियूंटी में इतनी ताकत होती है कि वो 20 दफ़ा अपने जिस्म को ऊपर उठा सकती है. Ant colonies are run by a single queen ant who control all the other ants. इनकी एक क्वीन होती है जो पूरी वो कॉलोनी होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है. Some queen ants can live for many years and have millions of babies. यानी इनकी इतने क्वीन ants जो होती हैं इनके इतने बेबी यानी millions of baby इनके सामने पैदा होते हैं और बड़े होते हैं. Ants don't have ears. They don't have ears. Yes. So this is the thing. Generally ants have a short life cycle, but some colonies members can live from as little as a few days to as long as a few decades. Probably one of the most important factors affecting lifespan is the respective ants caste. The queens, males and workers that occupy the ant colony. Ants have complete
Metamorphosis. Queen ants lay eggs. The baby ant that hatches from the egg is a larva with no legs, just a soft white body like a worm and a small head. The larvae are fed by the queen and then by workers.